Hello bachcho, let's read the question. The question says, in a closed system A in equilibrium with 2B plus 3C, if the partial pressure of C is doubled, then partial pressure of B will be option 1, twice the original pressure, option 2, half of its original pressure, option 3, 1 by 2 root 2 times the original pressure, option 4, 2 root 2 times the original pressure. So the key concept that we will be doing in this question is chemical equilibrium. So सबसे पहले तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं. The reaction is A, which is solid, is in equilibrium with 2B, which is gaseous, plus 3C, which is gaseous. अब मेरे सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो सिर्फ गैशियस मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है. सॉलिड और लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते. सो मीन्स जब हम इस रिएक्शन का Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, it will be only due to the gaseous molecules. So if I write the Kp for the above reaction in original conditions, that is equal to partial pressure of B raised to the power its stoichiometry, that is 2, into partial pressure of C raised to the power its stoichiometry, that is 3. So ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1. नाउ दिस वॉज द फर्स्ट केस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, तुम्हें ये बोला गया है कि C का प्रेशर डबल कर दिया. इफ प्रेशर ऑफ C इज डबल्ड, अगर हमने C का प्रेशर डबल कर दिया मतलब न्यू प्रेशर ऑफ C इज ट्वाइस द ओरिजिनल प्रेशर ऑफ C. ओके, अब मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज अगर मैं C का प्रेशर इंक्रीज करूंगी रिएक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा ताकि उसका कांस्टेंट की वैल्यू चेंज ना हो. Kp कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी. So now Kp becomes partial pressure of B, that is the new pressure, तो हम Pb dash लिख रहे हैं, raised to the power stoichiometry into partial pressure of C dash, because it is the new pressure, raised to the power its stoichiometry. अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, it will become Pb dash into Pc की जगह वैल्यू आ जाएगी 2Pc क्यूब. So this becomes equation 2. Now from 1 and 2, अब मेरी इक्वेशन 1 and 2 दोनों में Kp सेम था, सो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी. सो इट बिकम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ B स्क्वायर into partial pressure of C cube is equal to Pb dash square into 2Pc cube. Now on solving we will get Pb square into Pc cube is equal to Pb dash square into 8Pc cube. Now Pc cube will cancel out from both the sides and we will get Pb dash is equal to Pb square upon 8 under root. So this will come out to be Pb upon 2 root 2. So now we can see that the new pressure of B is 1 by 2 root 2 times the original pressure of B. So the correct answer to the question is option 3, 1 by 2 root 2 times the original pressure. I hope you all understood it well. Best of luck.